Dear students, welcome to my English grammar class of grade 3rd. Students, before commencing the concept, first of all, I will take the pledge. I, Jeevanjot Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, now come to the page number. Come to the page number 70, chapter number 23, simple future tense. Let's begin with the definition. We use the future tense to talk about an action that will take place later. Future tense हम कहाँ पे use करते हैं? वो वाले actions जो अभी होने वाले हैं, अभी फ्यूचर में होने हैं. Means something which take place in future. For example, we will eat our dinner in the evening. The farmer will cut the crop next month. Farmer ने अभी जो crop है वो cut करने हैं, next month cut करने हैं. तो अभी करने हैं, अभी किए नहीं है, उसने करने हैं next month. तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गई. The chick will grow to be a hen. So students, here I have written the formula. Subject plus will, shall plus verb first form plus object. सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. विल, शैल. हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बट यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है? विल, शैल को. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे इन थ्री एग्जाम्पल्स में, in these three examples we have used the subject. Here subject is we, the farmer, the chick, and we have used the helping verb will in all these three examples. After that we have used the verb first form and rest of the part is object. So all these things we have covered in these examples. So I will repeat this formula again. Subject plus will, shall plus verb first form plus object. Now come to the part first. Fill in the blanks with simple future tense forms of the verbs given in the brackets. Students, these are the forms of the verbs which are given in the brackets. हमें verbs दी हुई हैं bracket में और हमें fill करनी है blanks with the simple future tense. So all these are the subject. He, they, Amita, Aisha, my instructor, you, ये सारा क्या है? सब्जेक्ट. माई मदर, मिया, ऑल दीज आर सब्जेक्ट. और ये वाली क्या दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब्स. तो अभी इसमें हमने फिल करनी है सिंपल फ्यूचर टेंस को. इन ब्लैंक्स में फिल करना है सिंपल फ्यूचर टेंस. ही डैश यू विद योर होमवर्क. So students, I have already told you about the simple future tense. Again we will write the formula here. Subject plus will, shall plus verb first form plus object. So we will follow this formula. He dash you with your homework. So helping, so verb कौन सी दी हुई है? Help. So we will use the helping verb will
and we will use the verb first form help. What will come here? He will help you with your homework. So subject भी आ गया, helping verb भी आ गया, उसके साथ हमने verb की first form को भी यूज कर लिया और object भी आ गया sentence में. So subject plus will shall plus verb first form plus object. They dash the money wisely. They will use the money wisely. Amita plays guitar. She will win this competition. So what will come here? Will win. Aisha dash at home tonight as Jia has fever. Aisha will stay at home tonight as Jia has fever. My sick instructor believes it dash in the evening. So what will come here? Will snow. You and your friend dash travel for 2 weeks. So what will come here? Will travel. My mother dash home at 4 p.m. My mother will be at 4 p.m. Mia dash to go school tomorrow. Mia will go to school tomorrow. So students, we have used helping verb, subject plus helping verb, will shall and verb first form plus object in all these blanks. Now come to the second part of this chapter. Fill in the blanks with the simple future forms of the verbs from the box. अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो वर्ब्स गिवन थी वो ब्रैकेट में गिवन थी, अब यहाँ पे बॉक्सेस में गिवन है एंड वी हैव टू फिल इट इन दी ब्लैंक्स. आई डैश फॉर दी टिकट्स बाय डेबिट कार्ड. आई विल पे फॉर दी टिकट्स बाय डेबिट कार्ड. वी शुड हरी फॉर होम. इट विल बी डार्क सून. I dash us a cup of coffee. I will make us a cup of coffee. It is cloudy today. I think it will rain tomorrow. So what will come here? Will rain. He dash your bags for you. He will carry your bags for you. They dash all night long for the festival. They will dance all night long for the festival. She dash the dance classes after next week. She will join the dance classes after next week. He will buy a camera at the end of the month. What will come here? Will buy. I dash you this evening to know about your plans. I will call you this evening to know about your plans. The boy dash the multiplication table soon. The boy will learn the multiplication tables soon. I hope dash you soon. I hope they will visit you soon. She dash the bike as soon as she can. She will fix the bike as soon as she can. So students, all this is about the concept of simple future tense. I will repeat you again. Simple future tense क्या होता है? जब हम टॉक करते हैं एक्शंस के बारे में जो अभी थोड़ी देर बाद होने हैं, अभी हुई नहीं है, अभी फ्यूचर में वो होने वाले हैं, अभी होने हैं. समथिंग विच टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर. कोई भी एक्शन जो अभी फ्यूचर में होने वाले हैं. और इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी यूज की जाती है सब्जेक्ट के साथ? विल शैल. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट. So students, all this is about the part A and part B of this concept. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.